Guys, I think we have already discussed the classification of the markets. Okay. Okay, on the basis of the degree of competition. This is a very important thing you need to know that on the degree of basis of competition, there are two types of markets, perfect market and imperfect market. What are the perfect markets? Perfect markets are those markets. आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में कभी? Guys, am I audible to you or not? Yes, sir. You're Okay, so perfect. There are by and large on the basis of the competition, the market is divided into two categories: perfect market and imperfect market. Imperfect market has further classification. But what are the perfect markets? Perfect market are those markets which follow the following conditions. These are the conditions. Large number of buyers and sellers. All buyers and sellers in the market have perfect knowledge of demand and supply. There is nothing in the market which is hidden from the buyer or the seller. They both have the proper access to the market and the knowledge of the market. Prices at any one time are uniform over geographical area plus or minus the cost of getting supplies from surplus to deficit areas. भाई जब आप सरप्लस एरिया से डेफिशिट एरिया में ले जाएंगे तो जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है दैट इज द ओनली एडिशन. द बेसिक प्राइसेस वुड रिमेन सेम. The prices are uniform at any one place over periods of time plus or minus the cost of storage from one period to another. ठीक है, आपको ये लगता है अगर, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ द परफेक्ट मार्केट? देखिए दो बेसिक चीजें हैं. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे. बायर्स एंड सेलर्स के पास प्रॉपर एक्सेस होगी और प्रॉपर नॉलेज होगी. और लास्ट चीज ये है कि जो बेसिक प्राइसेस हैं वो सिमिलर होगी. डिफरेंस किस बात पे आएगा? उनकी स्टोरेज कॉस्ट की वजह से डिफरेंस आ सकता है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से डिफरेंस आ सकता है. इस वजह से डिफरेंस आ जाए तो आ जाए, वरना बेसिक कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है कहीं से कहीं तक. Second is imperfect markets. What are the imperfect markets? The classifications of imperfect market, like monopoly market. In monopoly market, there is only one seller. Definitely, when there is a one seller, that seller has a right to raise the prices up to any extent. He is definitely allowed to charge whatever he wants. And when there is only one buyer, that situation is called as monopsony. Monopsony is a situation when there is only one buyer. There are sellers, but there is only one buyer. That's it. And vice versa, the situation is duopoly. Duopoly is a situation when there is one monopoly, there is one seller, but in duopoly there are two sellers. And just like duopoly, the diopsony is a situation when there are many sellers, but only two buyers in the market. The next situation is oligopoly.
ओलिगोपोली, डिओपोली के अंदर दो सेलर्स थे, ओलिगोपोली के अंदर अ फ्यू सेलर्स, मोर देन टू। और इसका जो होगा वो ओलिगोप्सोनी होगा, इन विच इन ओलिगोप्सोनी देयर आर few buyers. Irrespective of the number of sellers, but there would be few buyers in the market. Next is monopolistic competition. Monopolistic competition is also very much similar with the perfect competition, but in monopolistic competition, there is a product differentiation. The product should be heterogeneous. भाई जैसे आप फल खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू गो टू द मार्केट फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बाय एंड लार्ज all these sellers are selling the fruits and vegetables are very much similar with each other. What you can do, in perfect market, when you are buying when you are going to buy the fruits and vegetables, the only thing which you can do is to check के अगर थोड़ा सा कोई आपको price differentiation दे दे, or you can check, you cannot check the quality but you can check the freshness, that's it. भाई अंदर से वो फल या वेजिटेबल खट्टा है, मीठा है, कैसा है, you cannot check it, but what you can check कि भाई fresh हो at least, that's it. But in monopolistic there should be a product differentiation, like FMCGs, there are toothpaste, like soaps, detergents, body washes. Fundamentally, they all are similar with each other. भाई साबुन का क्या काम है? जो साबुन का काम है वो हर साबुन का काम है, चाहे वो सेवलॉन का हो, डिटॉल का हो, किसी भी ब्रांड का हो, फियामा डिवल्स का हो या फिर लॉक्सिटॉन का हो. The basic function of the soap is to kill the germs and clean your body or clean your skin. That's it. But there are certain differences in the quality and the product. Savlon has different claim. Dettol has a different claim. Likewise, some companies are making a claim that some companies making claims that their soap is providing kind of moisturizing. Soap moisturizes your skin as well. So these are different claims making by the different companies. That is called the product differentiation. Core product is same, generic product is same, but there are certain differences which are being claimed by the manufacturer company. On the basis of nature of commodities, like in commodity market, commodity क्या होती है आपकी, जो रॉ मटेरियल से आप डील करते हैं, गेहूं खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, these are the commodities. And in capital market, you are dealing in the bonds and shares. Both the markets, you are investing your money and you are making the investment. But in the commodity market, you are investing in the tangible assets, and in capital market, you are investing in intangible assets. On the basis of stages of marketing. What may be the stages of marketing? Producing markets and consuming markets. Producing markets are those markets which are selling the products, or selling what kind of products? Those products which are meant to be used for further production. They are not meant for the, I mean, like what we should call it, for the consumption. तो जैसे स्टील का मार्केट है, अब स्टील की अगर हम एग्जांपल लें, आपका आप तो खैर एग्रीकल्चर से है, तो आप एग्रीकल्चर का एग्जांपल लीजिए. एग्रीकल्चर में तो दोनों तरह के मार्केट्स हो सकते हैं.
क्यों बॉस? भाई बहुत से लोग जो हैं वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को खरीदते हैं, दे आर बाइंग इट फॉर द further production, or they are buying it or for as seeds, and others are buying the grains for their consumption on the basis of extent of public intervention. Public intervention means that regulated and unregulated. Regulated markets are those markets which are being controlled and the rules and regulations are being followed in those markets. But in unregulated market, no such rules and regulations are being followed. Urban and rural, you know the difference. What are the characteristics of am I audible to you guys, or you are getting or not? You are understanding or not? Yes, sir. The next topic is demand and supply. डिमांड और सप्लाई का मतलब मालूम है आप लोगों को? Do you know the difference between the I mean, like in the initial slides I had shown you the basic difference between the needs, wants and demand. Do you remember that? Demand is that kind of wants which have the backing of financial support, or which have the financial support. Demand and supply in the market, which is something where plays a very important role in controlling the price fluctuation in the market. Or whenever the price is not being controlled by a central authority, the prices or the fluctuation of prices is dependent on the demand and supply of the product in the market. In a market where prices are not controlled, market price of a product or service is determined by the interaction of demand and supply. The consumer's willingness and ability to buy the product, that is the demand, and the seller's willingness and ability to produce and sell the product is the supply. What are the determinants of demand? Demand किस चीज पे determine करती है? Consumers' taste and preferences. For example, all of a sudden the taste and preferences of the consumer start getting changed. What would happen? The demand of a different product in the market will start increasing. Number of buyers in the market, obviously when the buyers in the market will starts increasing, they will automatically the demand of the products will also start increasing in the market. The same would happen with the consumer goods, consumer income. एक कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ेगी तो उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो और ज्यादा डिमांड करने लगेगा. This is something which is not applicable according to the economics. This is something which is not applicable, or this is something which has the exceptions like Giffen goods. You know the Giffen goods? Do you know the meaning of Giffen goods? Giffen goods are those goods which are not directly related with the income and demand relationship.
There's something which is an inverse relationship. As the income starts increasing, the individuals or the citizens of a country stops buying those products which they used to buy when they were not so rich or not so wealthy. Or there may be goods which have a relation with the social standards or the standard of living in the society. Price of related goods. Price of related goods is something which is it is also not a direct relationship. For example, if the prices of petrol starts increasing, definitely the demand for the petrol-based vehicles starts decreasing. क्यों? ये बताइए. इसमें भी दो चीजें होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री. देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है कि जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो पेट्रोल के व्हीकल की प्राइसेस डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी. तो किसी एक की प्राइसेस का दूसरे की डिमांड पे इंपैक्ट होता है. अगर ये इफेक्ट इनवर्स होगा, दैट वुड बी द सप्लीमेंट्री केस. दैट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री केस. और अगर ये इफेक्ट जो है ये डायरेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल द प्राइसेस ऑफ टी, ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ टी, द डिमांड फॉर कॉफी इज आल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो ये जो रिलेशनशिप है ये सप्लीमेंट्री होगी, क्योंकि चाय जो है उसको कॉफी सप्लीमेंट कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक जूस को सप्लीमेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल, या एरेटेड वाटर जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स को सप्लीमेंट कर रहा है. दूसरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ये कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि इन द फ्यूचर द प्राइसेस ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज्ड, सो इन प्रेजेंट इट्स डिमांड विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. अच्छा, सप्लाई के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं? इनपुट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि आपका जो इनपुट कॉस्ट आ गई, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, अगर वो बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली सप्लाई कम हो जाएगी. प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन की अगर टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो जाएगी या एडवांस हो जाएगी तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. जिन कंपनीज ने भी मशीन्स को ऑटोमेटाइज कर लिया, ये कर लिया, उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत इंक्रीज कर गई. टैक्सेस एंड सब्सिडीज, गवर्नमेंट जितने ज्यादा टैक्सेस लगाएगी उतनी सप्लाई कम होगी, और जितने गवर्नमेंट टैक्सेस को रिड्यूस करेगी उतनी सप्लाई बताइए ज्यादा होगी सर. एग्जैक्टली. Prices of other goods the supplier could produce. You must have heard about the concept of opportunity cost. If you haven't heard, please let me know. I'll explain it. That have you heard the concept of opportunity cost? No, sir. Okay. आपका क्या नाम है जिसने नो कहा? So, Yanisha. यनीशा. यनीशा बेटा एक बात ये बताइए कि फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपए हैं. कितने रुपए हैं? 100. ठीक. उस 100 रुपए में से आप क्या कर सकती हैं? आप 100 रुपए की चॉकलेट खा सकती हैं. Yes, sir. आप 100 रुपए की फॉर एग्जांपल किसी अम्यूजमेंट पार्क का टिकट खरीद सकती हैं. आप Yes, 100 sir. रुपए में किसी मूवी का टिकट खरीद सकती हैं.
आप 100 रुपए में कोई अच्छी बुक खरीद सकती हैं। ठीक, इन चारों चीजों की जो प्राइसेस हैं वो 100 रुपीज है। मुदस्सिर साहब बिरयानी भी खरीद सकते हैं, चलिए आपकी बिरयानी भी लगा सकते हैं। यनीशा बिरयानी खाती हैं आप? यस सर। चलिए 100 रुपए की बिरयानी भी मुदस्सिर ने कहा, तो 100 रुपए की हमने बिरयानी भी लगा ली इसमें। अब 100 रुपए में सिर्फ आप इन पांचों में से एक चीज कर सकती हैं, आप क्या चीज प्रेफर करेंगी? सर बताइए। अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क। तो आपका जो अम्यूजमेंट पार्क होगा उसको एंजॉय करने के लिए यू हैव पेड अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट थिंग्स विच यू डिसाइडेड नॉट टू बाय फ्रॉम दैट 100 रुपीज। वो आपकी चॉकलेट्स थी, वो आपकी बिरयानी थी, वो आपका मूवी का टिकट था, वो आपकी फेवरेट ऑथर की बुक थी। ठीक, ये चारों चीजें दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू गेट द फन इन द अम्यूजमेंट पार्क। आप समझिए आप इसका मतलब यस अपॉर्चुनिटी सर। कॉस्ट क्या होती है। यस सर। सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो आप कर सकते हैं, जैसे आपके पास 2 घंटे हैं लेजर टाइम के, अब 2 घंटे में आप क्या कर सकती हैं भाई? आप 2 घंटे मूवी देख सकती हैं, आप 2 घंटे सो सकती हैं, आप 2 घंटे में कोई बुक पढ़ सकती हैं, आप 2 घंटे किसी फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर सकती हैं। आप क्या प्रेफर करेंगी चारों में से? सर मूवी। हम्म, मूवी। तो मूवी देखने के लिए आपने क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की? सर बुक्स, अम्यूजमेंट पार्क और नहीं, अम्यूजमेंट स्लीप। पार्क नहीं किया आपने, फ्रेंड्स हैंग आउट किया, स्लीप की। यस सर। अब समझ गए आप लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट? यस सर। सप्लायर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर। अच्छा, सप्लायर को अगर ये लगेगा कि फ्यूचर में इस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर फौरन उसकी सप्लाई को स्लो स्लो डाउन कर देगा। उसको लगेगा कि यार मैं थोड़ा सा अपने स्टॉक्स में रख लेता हूं एंड आई विल सप्लाई इट वंस द प्राइसेस विल गेट इंक्रीज। या नंबर ऑफ सेलर्स एंड सप्लायर्स मार्केट में कितने हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप जितने ज्यादा सेलर्स और सप्लायर्स होंगे उतनी सप्लाई स्मूथ रहेगी। क्यों सर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया, ये बताइए। बताइए समझ में आया? नेक्स्ट शुरू करें, क्या करें बताइए। आ गया सर। आ गया और सर।
ओके गाइस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? From the marketing point of view, this surplus is more important than the total production of commodity. The arrangement for marketing and the expansion of markets have to be made only for the surplus quantity available with the farmers and not for the total production. The rate at which agricultural production expands determine the pace of agricultural development, while the growth in the marketable surplus determines the pace of economic development. प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का? जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा सरप्लस होगा आपके पास। सरप्लस का मतलब क्या है? सरप्लस का मतलब यह है कि जो बेसिक कंजम्पशन के अलावा आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। The market and marketable surplus helps the policy maker as well as the traders in the following area: framing sound price policies, developing proper procurement and purchasing strategy, because you have the surplus production. You don't have the scarcity in the market. Because in the situation of the scarcity, you will have to keep the prices, lower down the prices and all. What do you mean by the marketable surplus? Marketable surplus is actually a theoretical concept, and marketable surplus is actually something which a farmer is sending to the market after, and whatever is that has been left with the farmer after meeting his family requirements. The marketable surplus is that quantity of the produce which can be made available to the non-farm population of the country. भाई जो भी गेहूं आपको मार्केट में मिल रहा है, जो भी चावल दालें आपको मार्केट में मिल रही हैं, सब्जी है, फल है, this is actually a marketable surplus in this context, because this is something which the farmer has sent to the market after taking or after meeting his own family consumptions. The marketable surplus is the residual. ये देखिए वही बात आ गई। Marketable surplus is equal to P minus C, यानी टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल रिक्वायरमेंट। टोटल रिक्वायरमेंट उसकी फार्मर की अपनी फैमिली की जो है। What is the marketed surplus? Marketed surplus is that quantity of the produce which the producer farmer actually sells in the market. मार्केटेड सरप्लस में और मार्केटेबल सरप्लस में क्या फर्क है? अच्छा ये बता दीजिए। चलिए देखिए, मार्केटेबल सरप्लस जो है एक आइडियल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन ये कहती है कि फार्मर जो है अपनी खुद की फैमिली रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ जाता है। और मार्केटेड सरप्लस ये कहता है कि दिस इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन कि दैट फार्मर इज नॉट गोइंग टू टेक इवन अ सिंगल पीस ऑफ हिज प्रोडक्शन फॉर हिज फैमिली कंजम्पशन एंड सेंड एवरीथिंग टू द मार्केट। क्या समझ रहे हैं इससे बताइए? देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि वो कोई इतनी एक्सपेंसिव चीज ग्रो कर रहे होते हैं कि उनको लगता है कि वो अपने फैमिली में ना कंज्यूम करें इसको, बिकॉज आफ्टर सेलिंग इट दे कैन गेट मच मोर।
Guys, we are running short of time. I'm just reconnecting the class. You need to rejoin it, okay? So that we will be able to finish this topic. Okay, ये किस सिचुएशन में होती है ये? Small or marginal farmers के who need cash. For them, the cash is more important than the crop. This situation of selling more than marketable surplus is termed as distressed or forced sale. दूसरा क्या रिलेशनशिप है? मार्केटेड सरप्लस जो है वो कम हो जाएगा मार्केटेबल सरप्लस से जब फार्मर्स को ये लगेगा कि वो ज्यादा रिटेन कर लें। अच्छा, फार्मर को कब ये लगेगा कि वो ज्यादा रिटेन कर लें? जब फार्मर को ये अंदाजा होगा कि इस चीज की प्राइसेस बढ़ने वाली है मार्केट में, तो फार्मर अपने पास होल्ड कर लेगा। होल्डर सुना है अपने? होल्डिंग होल्डिंग क्या चीज होती है? आप लोग इस टर्म से तो अवेयर होंगे ही। Yes, sir. और इक्वल कब होगा मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस एक दूसरे के? जब फार्मर एग्जैक्टली उतना ही अपने पास रोकेंगे जितना उसकी फैमिली के कंजम्पशन के लिए रिक्वायर्ड है। दैट्स इट। What factors can affect the marketable surplus? Size of holding, production, price of the commodity, size of family, requirement of seed and feed. भाई इसको सीड भी तो निकालना होता है फार्मर को। अगर एक गेहूं का किसान है, गेहूं उगा रहा है, that farmer has to keep some wheat grain for his family consumption as well as some wheat grains for further production of wheat or for wheat grain to be used as seed. Okay. Of marketable surplus and both the category of producer plus. Now you got the point? बताइए भाई स्टूडेंट्स। बताइए भाई, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? नहीं आया? All right, let's see you in the next class. Thank you.